during my summer holiday visits to my uncle's house in Vasai, a historical city near Mumbai's western suburbs located in the Palghar district. I used to be that starry kid who used to look out of the train, not just to enjoy the scenic beauty, but also to discover things I never knew of. When the train used to cross Naigaon station, I was always astonished to see these white pyramid-like structures lined up one after the other. I used to consider them to be monuments of historical importance, just like the ancient Egyptian pyramids, until my father told me that what I just saw was salt. The same ingredient which is known as sodium chloride scientifically, and that which flavors the food and is used as a binder and as a stabilizer. But apart from being just a regular ingredient, this has a story to tell you. Hello to all the viewers out there, my name is Jinto. It's a beautiful morning, 6:30 am, and we are at one of the largest salt pans of the country, the Vasai salt pan, producing 12,500 tons of salt annually. Today, India is one of the largest salt-producing countries of the whole world. But in earlier times, this was so important that the Europeans used to call it the white gold. Salt farming began way back in the Kutch region of Gujarat. Some believe that it was almost 2 centuries ago when a local community noticed that the water below the ground level was brine, that is concentrated water solution, and thus began the business of salt. But there also came a point when the Britishers who were ruling India imposed the Britain Salt Act of 1882, which prohibited Indians from buying and selling salt. Indians were forced to buy the vital mineral from British rulers, who in addition to exercising a monopoly over the manufacture and sale of salt, also imposed a heavy tax. And this is exactly when a revolutionary move in the history of Indian independence happened. The Dandi March of 1930, which was a civil disobedience movement led by the father of our nation, Mahatma Gandhi, which spanned 387 kilometers from Sabarmati Ashram to Dandi Beach, breaking the British Salt Act. Salt farming thus started flourishing, not just in Run of Kutch, but also in different parts of the country, and Vasai was one of them, the very location where we are right now. Due to its close proximity to the Vaitarna and Ullas River, this became a perfect place for salt farming. It is believed that this was a part of a water body centuries ago, but an earthquake turned it into a mud desert. There is still a lot of water underneath this, carrying an average of 10 to 20% more than the normal seawater, and thus started a migration of people from Gujarat to this place known as agarias, and most of them have a legacy to talk about. तर सर्वांत आधी तुमचं नाव काय आणि तुम्ही कुठून आहेत ते सांगा. आम्ही डहाणूचे आहेत. दानुष, आणि तुमचं नाव काय? दिवाल. तुम्ही किती वर्ष झाले हे बिझनेसमध्ये आलो? हे आम्ही 4 वर्ष गॅप दिली होती, या वर्षी अजून आला. वसईमध्ये कसे आले ते सांगा. वसईमध्ये कसं मजुरीसाठी या लागते ना. धंधे में क्या ऐसा हमारे उधर काम नहीं है, इसलिए आना पड़ता है इसमें. इसलिए क्या काम कुछ नहीं है ना हमारे उधर. हम खेती करता है गांव में. मेरा नाम है चंद्रकांत धाकला कोकेरा. मैं इधर 12 साल हुआ काम करके, लेकिन सुबह से 6 बजे तक 10 बजे तक काम करना पड़ता है. नमक निकालने के लिए सुबह 3 बजे से 8 बजे तक नमक निकलता है. पहिले तर काय जी मातीचे काम असते पहिले सुरुवातीला आल्यापासून, नंतर ते काय लिपणी बिपणी करायचे, ठोक मारायचे, नंतर त्याच्यात पाणी सोडायचे
मग मीठ तयार होतं. लाडी बसाने के लिए 1 महीना लगता है. 1 महीना लगने के बाद वो कुंडी घसट जाता है और घसटने के बाद 8 दिन के बाद माल तैयार होता है और ऊपर खींचता है और नमक डालता है ऊपर, ट्रक भर के जाता है. और दाता मारने के लिए 6 बजे से 10 बजे तक दाता मारने का काम होता है. 30 डिग्री का पानी तैयार होता है, उसी काटा तैयार रहता है. From October to June, that is for 8 months, these salt farmers, they stay away from their family. They toil it out in the heat just to make sure that there is salt in your plate. The monsoons just fill this entire area with water, and these salt farmers, they have no other option but to go back to their respective hometown. And then they come back in the month of October, they dig the pits, they flatten the ground, and all of this is done manually by hands. स्टार्ट से आएगा और पहले बोरवेल का चालू करता है और पानी सब इधर इधर सब भरता है. पानी भरने के बाद वो कुंडी रेवल करना मांगता है. वो दातरी इसमें घुमाना पड़ता है, दातरा घुमाना पड़ता है और चिक्कड़ है ना, और रेवल करना मांगता है. रेवल करने के बाद ठोकना पड़ता है. बाद में वो कड़क होएगा ना, वो अपन चलता है ना तो लगेगा ना, ऐसा होता है. ऐसे बाद में पानी इसमें छोड़ता है. उसके बाद 1 महीना लादी बैठाने के लिए और घिसने के बाद 8 दिन के नमक तैयार होता है. और उसके बाद ये कहाँ जाता है? और नांदूर लातूर सब उधर बाहर जाता है सब माल. ये वहाँ पे फैक्ट्री इसका जहाँ हाँ, बनता है पूरा? फैक्ट्री बड़ा और वहाँ से बन के मार्केट में पार्सल. In the beginning of every season, the merchants, they give the farmers an advance to start their work. And once the product is ready, the merchants, they come and they buy the salt in bulk and they sell it in the market. But this is not as fancy as it may sound, because there is also a dark side to it. जो आप लोग जो ये सॉल्ट बेचते हो, 1 किलो कितने बिकता है जो मालिक लोग खरीदते हैं आपसे? मालिक लोग लेते हैं और अपडेट 1 किलो से बेचता नहीं, टन से हिसाब से बेचता है. टन के हिसाब से बेचते तो 1 टन का कितना मिलता है आपको? 2500 1 टन का. 1 टन का. यहाँ पे 35 लोग काम करते हैं, तो उनका पे कैसा होता है? कितना पगार मिलता है उनको 1 दिन का? एंड पगार 1 दिन का बहुत कम है. पगार कितना है? कम है? 300 रुपया है दिन का. दिन का. हाँ, खाना बना उनका सेट का है. The processed salt that we get in the market has got less than 20% of original salt in it. We are literally paying to eat chemicals, whereas the white gold and the people who make it are simply being ignored, and their poor working conditions just adds more to the misery. To put things into perspective, when a salt farmer dies, his feet does not burn during cremation because there is so much of salt accumulated in there. तो मैं देख रहा हूँ कि आपने एक पे मोजा पहना है, एक पे नहीं पहना है, तो ऐसा क्यों है? आपको दिया नहीं गया है कि? दिया नहीं है ना, सेठ को देता नहीं. सेठ आपको देते नहीं देते. तकलीफ होते है, बहुत तकलीफ होते है. ये देखना था, ये होल पड़ गया ना, ये पूरा, ये इसमें थोड़ा है, इसमें ये पूरा इसमें नहीं है. ये देखना कैसा हुआ, समझा? आज ऐसा हुआ है और 2-3 दिन पूरा होल पड़ जाएंगे. कितना हालत होगा हमारा ना. आपने कभी मांगने की कोशिश किया मोजा या बूट्स ये सब? आपके सेठ से? इसमें बूट नहीं चलता है, वो मोजा चलता है. चलता है मोजा? हाँ, मोजा खाली चलता है, बूट नहीं चलता है. सेठ से कभी मांगा आपने कि एक दे दो मोजा? हाँ, अपन देता नहीं है ना सेठ. नहीं देता कभी? हाँ, कभी नहीं देता है. Despite the harsh working conditions, these salt farmers, they work and they live here until the spring. A lot of us seeing this video might want to help, but even if we want, we cannot actually help them because these people, they don't have a strong union. And while India has become the 3rd largest producer of salt in the whole world, the condition of these people have gone from bad to worse. Most of them are semi-literate or illiterate, coming from poor background, and their only aspiration is to earn as much as to feed themselves and their family members back in the hometown. And the salt merchants somewhere take the advantage of this very situation, as a result of which their profits have doubled, but the people who hustle it out for 8 months in a year, breaking their backs, get a minimalistic amount. आप लोग इतना मेहनत करते हो रोज, सुबह से लेके शाम तक, और इतना कम पगार मिलता है आप लोग को. क्या आप लोग लगता है कि एक तरह से एक अन्याय हो रहा है आप लोग के साथ? हाँ, नहीं तो है रहे ना, लेकिन हाँ. क्या कर सकते हो आप इस बारे में? नहीं ऐसा का कुछ नहीं है. क्यों, मतलब अब तक क्यों ऐसा कुछ हो नहीं पाया? नहीं, सरकारी अगर होगा ना तो हमारे भी अच्छा उसका फंड सर्विस सब मिलता है ना. ये खुद मालिक का अगर है, मालिक का है. हाँ, इसीलिए पगार कम है. खुद सरकारी अगर होगा ना तो सब पगार बढ़ा के देता है. जो कोविड-19 हुआ था, अभी बीमारी हुआ था, पूरी दुनिया बंद पड़ी थी,
हाँ तो वो टाइम नमक के धंधे को किस तरह अफेक्ट किया उसने? क्या कुछ अफेक्ट उधर हुआ भी क्या? आदमी उधर ही था ना, गांव जाने के लिए छोड़ता नहीं है, इसीलिए इधर ही था। इधर आदमी कुछ हो गया नहीं, इसीलिए ठीक है। तो वो टाइम भी आप लोग काम कर रहे थे? हाँ कर रहे थे, धंधा चालू था? हाँ चालू था। पगार सेम वही मिल रहा था आपको? हाँ 300 वही, रुपया? हाँ 300 रुपया। कितने साल हो गए मतलब 300 रुपया पगार में आप लोग काम कर रहे हो? 300 रुपया अभी से बोलता हूँ ना तो 26 साल हुआ इधर। 26 साल। 26 साल? हाँ 26 साल में 1 रुपये बढ़ा नहीं आपका पगार? 1 रुपया भी बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा है पगार इतना ही 26 साल से। The Agarias have faced a long history of mistreatment. The British in fact classified them under the Criminal Tribes Act of 1871. But many historians say that it was only a way to control the ones belonging to the lower class. I don't know how true is that, but after the end of the British rule in India, they were declassified, meaning there were no more criminals. And now with few other options, they were trapped in the business of producing salt. अभी सरकार ने भी बेच दिया ना सब, अभी कैसे होएगा माल? खाने के लिए मुश्किल होएगा, ये सब बेचेगा तो। नमक खेती जो आपके जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं उनसे हाँ। कुछ निवेदन है आपकी? नमक खेती वाले को सब गोगल तो मांगता है, लेकिन गोगल मांगता है, बूट मांगता है, सब कुछ देता नहीं। पहले देता था, देता नहीं है लोग ये सब। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो नमक के किसान ये लोग गरीब होते जा रहे हैं एंड जो सेठ लोग ये लोग बोलते हैं और पैसा कमा रहे हैं एंड और अमीर बन रहे हैं? अमीर बन रहे, बराबर। क्या कहना सही होगा? सही है, सही है। हाँ। बट अंटिल द हेल्प अराइव्स दीज पीपल विल बी बैक होम नेक्स्ट सीजन। नमक बनाने का जो धंधा, इसका भविष्य क्या लग रहा है आपको? क्या कैसे होगा? उज्जवल होगा कि कैसे? है उज्जवल है, उज्जवल है। नमक हमेशा खाने का भाग रहेगा तो? हाँ भाग रहेगा ना। वो गांधी जी से अपन बोलता था ना, हाँ पुरानी, तब से लेके अब तक अब तक चालू होगा नमक। हाँ पहले नमक कौन नहीं देखा, किसने देखा भी नहीं ना नमक, इसलिए। तो क्या लगता है आपको जो पगार वगार आपका है जो आगे बढ़ने वाला है कि सेम कंडीशन ऐसी रहने वाला है? नहीं ऐसे ही रहने वाला ऐसे है, रहने वाला है। कुछ नहीं पगार। आप लोग इस चीज़ से खुश तो नहीं होंगे? नहीं नहीं खुश तो नहीं खुश कैसे होंगे? कम पगार में कैसे खुश होंगे? पगार कम है, इसलिए खाने को कुछ मिलता नहीं है। इसमें क्या कितना 300 रुपये पगार, 300 रुपये में दिन में क्या खाने का? ज़्यादा पगार होएगा तो ऐसा कितना होना चाहिए आपके हिसाब से एक दिन का अगर पूछूं तो? कम से कम 600 तो हमने मांगता है। 600 कम से कम? हाँ। आप लोग दिन में मतलब 12 घंटा आई थिंक काम करते हैं। 12 से आधा घंटा। हाँ फिर भी 300 रुपया काफ़ी कम है देखा जाए तो। बहुत कम है ना। What's important for you to understand is the fact that the fine salt that we get in the market is a chemical mess. हमारा जो मार्केट में जो नमक मिलता है, हाँ। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें एक फ़र्क है, ये कि बिना केमिकल का है। वो केमिकल डालता है, कैप्टन को बोलता है, टाटा नमक बोलता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचते हैं, नाम लेकिन बेचते हैं। सारे प्रोडक्ट एक ही होते हैं। एक ही है, सारे केमिकल वाले ही। हाँ केमिकल वाले। तो कंपनी में गया माल सब केमिकल का, ये माल ओरिजिनल खाने के लिए है माल ऐसा। ये जाड़ा वाला नमक है, शुद्ध नमक है। हाँ ये शुद्ध नमक है, वो जाड़ा वाला है, इसीलिए खाता नहीं है। सब खाता है पहले का दिन, अभी खाता नहीं है। नमक छोटा मांगता है ना, इसीलिए। So what you can do is to start buying crystal salt which has all the essential minerals. तो अगर एक आम इंसान को आपसे खरीदना है नमक, हाँ। तो वो पॉसिबल है क्या? है ना, है। ऐसे खरीद सकते हो? हाँ खरीद तो सकते हैं आप ना। लोग कैसे बेचते हो उसको? क्या टन से हिसाब से? टन के हिसाब से? हाँ। जो मार्केट वैल्यू है उसमें मिलेगा कि अलग से कुछ देना पड़ेगा उसको? नहीं नहीं वही टन से हिसाब से। टन के हिसाब से। Speaking to Mr. Diwal, Chandrakant, Vijay, Jignesh and Mr. Nandu made me realize how trivial my daily life problems are when compared to the hardships faced by these men. This was also a reminder to be grateful for everything we have been blessed with, be it good food to eat, friends to hang out with, and entertainment to get away from the realities of life. What you and me consume on a daily basis
And that which can make or break our dish, if not used in the right proportion, is the result of the countless hours of blood and sweat put in by these men who have been exploited for all these years. But a ray of hope in this dark tunnel is when we switch back to crystal salt, which not only uplifts our health but also empowers these men directly. Charity begins at home, and who would not like some white gold in their kitchen? So that one fine day even you can say, मैंने देश का नमक खाया है.